welcome back to another lesson which is being organized by your school Metropolitan. My dear students, today's lesson is all about the review of the lessons which we have covered so far. So let's start with unit number 3, which is about plants and their parts. My dear students, plants are living things just like us. They have some needs to be fulfilled in order to live, in order to grow, in order to breathe, and if we do not provide all the needs which they particularly need to live, they will soon die. So as we all know that plants need sunlight in order to make their food, they need water and they need oxygen to breathe, right? Then comes the types of plants. The types of plants are shrubs, herbs, creepers and climbers. Shrubs are the bushy plants which have so many bushes और उनकी क्या होते हैं जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही क्लोजली इम्पैक्ट होती हैं, राइट. देन कम्स herbs. herbs क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? herbs जो होते हैं वो मोस्टली हम अपनी मेडिसिन में यूज़ कर रहे होते हैं. वो प्लांट्स होते हैं जो हम खानों में यूज़ कर रहे होते हैं. वी कंज्यूम इट एज ह्यूमन बींग्स. देन कम्स माय डियर स्टूडेंट्स creepers. creeper my dear students are those plants which stay on the ground. वो सिर्फ क्या करते हैं? मूव अराउंड द ग्राउंड करते हैं, वो ऊपर नहीं आते, लाइक ट्रीज एंड क्लाइंबर्स. देन वी हैव क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर दोज प्लांट्स माय डियर स्टूडेंट्स जो किसी और चीज़ की हेल्प के थ्रू क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. इट टेक्स सम थिंग्स हेल्प और सम अदर प्लांट्स हेल्प टू ग्रो अबव द ग्राउंड, राइट. So these are the types of plants: shrubs, herbs, creepers and climbers. Then comes trees. Then other type of plant is tree. They are very tall and they are above the ground. They have in place of stem they have trunks. A huge trunk means उनकी trunks जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा wide होती हैं. As we all have seen, trees की जो ट्रंक होती है वो पतली सी नहीं होती, वो बहुत मोटी होती है इन ऑर्डर टू कीप दैट पर्टिकुलर ट्री इन प्लेस एंड उसका वेट की वजह से वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं. जस्ट लाइक दिस इज अ ट्रंक ऑफ अ ट्री विच हैज़ दीज रिंग्स इनसाइड द ट्रंक, दीज नॉट्स ऑन द trunk and this is called bark, right. Then comes the parts of a plant. Parts of a plant में क्या होते हैं? flowers, leaves, roots and stems, right my dear students. उसके बाद सबसे अमेजिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट क्या है? उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, राइट. जितने भी फ्रूट्स हमें मिलते हैं वो पहले फ्लावर होते हैं, देन दैट पर्टिकुलर फ्लावर जो होता है वो क्या करता है? वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है. देन कम्स द पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स के भी क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले वी हैव द स्किन ऑफ अ फ्रूट, देन इनसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किन वी हैव द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट एंड इन द एंड वी हैव सीड. जैसे कि इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ अ मैंगो, मैंगो की एग्जांपल में क्या होगा? सबसे पहले वी हैव अ मैंगो ओवर हियर. ये क्या है? उसकी स्किन है, राइट. इफ वी कट इट इनटू हाफ, जो अंदर का पार्ट होता है विच वी ईट वो फ्लैशी होता है और इसके सेंटर में क्या होता है? एक सीड होता है, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीड्स. यू हैव सीन कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वन सीड होता है. उसके अलावा सम हैव टू सीड्स, बट देयर आर मैनी फ्रूट्स विच हैव फ्यू सीड्स एंड मैनी सीड्स एज वेल. जैसे कि इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, उसके अंदर कितना होता है? वन सीड होता है, राइट. बट इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ एप्पल, उसके अंदर मोर देन वन होते हैं, फ्यू सीड्स होते हैं. एंड अगर हम बात करें पोमग्रेनेट की, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट. एंड सम सीड्स ग्रू इनटू प्लांट्स. जब हमें उनको रीग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं? उन सीड्स को बरी डाउन कर देते हैं इनटू द ग्राउंड और उसके बाद एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है, राइट. उसके अलावा बात करते हैं नट्स की. नट्स आर दी हार्ड शेल्ड फ्रूट्स, राइट. वो भी फ्रूट्स होते हैं बट क्या होता है? नट्स की ऊपर की जो शेल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, राइट. सो this chapter was all about the plants and their parts, and in this chapter we have done the exercises of page number 21 on which we have concept checked, in which we have to mark whether the statements are true or false, right.
The other is on page number 22, and the exercise is one in which we have to choose the correct answer. We have some options and we have to choose among them which one is the correct statement. Then we have exercise 2 of page number 22, my dear students. This one is also on page number 22. In this, we have to fill the blanks with the words given in the box. Then we have exercise 3 on page number 23, in which we have to differentiate whether the given words are trees, herbs, shrubs, right? Then the next exercise, which is exercise 4 on the same page, is about we have to match the fruits and the seeds. हमारे पास ऊपर जो है एक लाइन है फ्रूट की, एंड देन नीचे हमारे पास सीड्स हैं इन विच वी हैव टू मार्क कौन सा सीड कौन से फ्रूट का है. Then the next exercise which we have done is exercise 6, in which we have to write the why should we not eat some plants, right? Because we have discussed in the lesson that some plants can be dangerous, it can be poisonous. हमें हर ऐसे कोई berries उठा के खा लेनी नहीं चाहिए क्योंकि वो poisonous भी हो सकती हैं, वो harmful भी हो सकती हैं, right? Then we have exercise 7 of page number 23, in which we have to give the short answers of the questions given over there, right? So we have done with the unit number 3. Now it's start with unit number 4, in which is linked with this chapter, and in this chapter we are going to talk about the uses of plants, right? So first of all, we have written plant over here, and these are some uses. First of all, plants provide us oxygen. They are the main resource of oxygen in this world. That's why they are called the lungs of the earth, right? Then they are the provider of flowers and fruits. अगर flowers नहीं होंगे तो fruits भी नहीं होंगे, right? And flowers can be used as decoration. We also use in giving someone. उसके अलावा fruits होते हैं. Then they are home to many birds as well. जैसे कि हमें पता होगा birds कहाँ रहती हैं? They make their nest, they make their home in the trees, right? So plants are also the home for many birds. Then they are the providers of vitamins and minerals and fruits, vegetables and nuts and berries. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें plants के through ही मिल रही होती हैं, right? Then if we talk about the parts which we eat, which we consume, तो यहाँ पे roots होती हैं जो हम खाते हैं, such as beetroot and carrot. Carrot और beetroot क्या होते हैं? वो under the ground grow करती हैं, उसके बाद हम उनको निकालते हैं and then we consume it, right? Then some leaves which we eat are spinach and cabbage. ये दोनों क्या हैं? They lie in the category of leaves which we eat, right? Then stems में sugar cane आ जाता है जिसके through हम अपनी sugar भी बनाते हैं, right? Then grains में rice and we have wheat which we eat, and in fruits and nuts we have mango and many other fruits, and in nuts we have almonds, pistachios and many more. In seeds we have beans and we have kidney beans as well, we have peas. So there are many seeds which we eat, right? Then plants are also the providers of wood, and through the wood we make different furniture. जैसे कि हमारी chairs होती हैं, हमारी tables होती हैं, and abroad में हम जो घर होते हैं उसमें भी wood use हो जाता है. So plants are the provider of wood through which we make our furniture. They also provide us fiber and cotton through which we make many things like clothing and other stuff and bags. Then from seeds we can make oil, like sunflower seed is mostly used in oil, mustard is also used in making oil, right? So these all come from plants. Then flowers are used in perfumes. The perfumes which we use in daily routine lives are the extractions of the flowers. उनकी जो fragrances होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? वो हमें flowers से provide होती हैं, right? So that's all for the explanation. For the review of this chapter, let's start with the exercises. We have done the concept check on page number 27, in which we have done the fill in the blanks with some words. Then we have exercise 1 on page number 29, in which we have choose the best answer and we have to choose the correct answer from it. And in exercise 2, we have
some fill in the blanks, and we have to write whether the thing is a seed, a fruit, or whatever, right? Then in exercise 3 of the same page, there are some lists given, and we have to get the odd one out from that particular list, right? Then we have exercise 4 on page number 30, in which there are few pictures given, and we have to mention whether they are from plants and whether they are not from the plants. Then on page number 31, we have exercise 6, in which we have to write whether they are the root vegetables, they are grains, they are stems or fruits, right? So we have to categorize all the given things, all the given minerals, and all the things which we eat to the correct basket, right? So that's all for the lesson of 4, and we have discussed unit number 3 and 4 in this lesson, in which we discussed everything about the plants, right? Hope to see you in the next one. Allah Hafiz.